अस्सलामुअलैकुम, बोंजूर, हेलो। मैं आज आपके साथ oatmeal raisin cookies बनाऊंगी। ये हमारे ingredients है। आपको ingredients की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। 1.5 cups flour, 8 cup brown sugar, 8 cup मक्खन, 2 अंडे, 8 cup rolled oats, 8 cup कशमश, 1/4 teaspoon नमक, 1 teaspoon baking soda। सबसे पहले मैं मक्खन को क्रीम करूंगी एक हैंड मिक्सर से। अब मेरे को ब्राउन शुगर डालना है अंदर। और ये मिक्स करना है। अब मैं अंडे डालूंगी अंदर। अब मैं 1 at a time अंडे डालूंगी अंदर। अब मैं ये हाथ से कर रही हूँ। अब मेरे को फ्लावर, सॉल्ट और बेकिंग सोडा मिक्स करना है। अब मैं थोड़ा थोड़ा इसमें डालूंगी। अब मेरे को हैंड मिक्सर की जरूरत नहीं है। अब मेरे को ये हाथ से मिलाना है। अब आप ओवन को प्रीहीट कर सकते हैं 350 फ़ारेनहाइट। डाल रही हूँ। मैं ये मिक्स कर ली और ये बहुत स्मूथ है। अब मैं ओट्स और किशमिश डालूंगी अंदर। मैं पहले ओट्स करूँगी और फिर रेजिन्स और ये मिक्स करना है। मैं मिक्स कर ली, ऐसे देखना चाहिए। अब मैं ये स्कूपर से स्कूप करूँगी ये ट्रे में जिसमें पार्चमेंट पेपर है। ऐसे हमने छोटी बारी ये ट्रे में स्कूप कर ली। अब मैं ये ओवन में रखूँगी 10 मिनट्स के लिए। हमने कुकीज हमने ओवन से निकाल लिया। अब मेरे को चखना है। जबरदस्त।
मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात बोलनी है, अगर मैं बना सकती हूँ फिर आप भी बना सकते हैं।